Don't you think that you're being rather tough on Manoj Muntashir? He's just a dialogue writer. I am also. You are saying now that why am I being so hard on Manoj Muntashir? I have no sympathies for that man. Is because he really took sentiments for granted. Your Manoj Muntashir is saying that ये रामायण नहीं है. His defense is अब तो ये तो आदि पुरुष है. हम तो इंस्पायर हुए थे. पहले 1% हमने चेंज नहीं किया. आपको पूरी आस्था मिलेगी. मैंने चप्पल खोल के लिखा है और अब बोल रहा है कि ये तो इंस्पायर्ड है. आप मुझे ब्लेम ही नहीं कर सकते हैं. That is the sort of double talk that people are seeing is as completely unacceptable. शाहरुख खान की जो अगली फिल्म आ रही है जवान, तो अभी लेटेस्ट उसमें ये है कि वो बुक माई शो पे 7 सितंबर को पिक्चर रिलीज हो रही है, लेकिन एज ऑफ नाउ बुक माई शो में 90,000 से ज्यादा लाइक्स हैं। विच कैसे देखते हैं आप इस फिनोमिनन को? आज के टाइम पे सिनेमा हॉल्स में लोगों को लाना आसान नहीं है, बट ये इस तरीके का एक एक्साइटमेंट जनरेट कर पाना। ये तो आप मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो कि जवान के पहले बॉयकॉट आएगा कॉल, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी निकाली जाएगी. हो ही नहीं सकता है. शाहरुख खान के करिश्मा में और शाहरुख खान के फेम पर कब तक चल लोगे? और अब तो समझ जाओ कि भैया आउटसाइडर टैलेंट इज रिक्वायर्ड और आपकी टैलेंट खत्म हो चुकी है. Hi, this is Akash Banerjee. You're watching Connect FM Canada with Faridoon. Stay connected. आकाश बैनर्जी, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा. कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक. आपके कार्यक्रम देखते रहता हूँ. एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या हो रहा है वो सब देख रहा हूँ. बड़े मजे आ रहे हैं. बट आई मस्ट टेल यू, एज मैंने पहले भी आपसे कहा है कि दैट यू आर एक्सट्रीमली पॉपुलर हियर इन कनाडा एंड यूएस, एंड I've seen your journey and it's so fascinating. I mean, you've crossed like 3 million subscribers, and the credibility, the way it is rising is truly wonderful. So congratulations for that. Thank you so much. One just hopes that there is more space for reason and logic. That's what we hope for. Amazing. Alright, मैंने आपके 2 वीडियोस देखे आदि पुरुष के ऊपर, और मेरे जहन में जो पहला सवाल आया, मैंने सोचा कि दैट don't you think that you're being rather tough on Manoj Muntashir? He's just a dialogue writer. Yeah. The only thing is that had the movie, this is a traditional problem. Had the movie been a super hit, then Manoj Muntashir would have gone into all television studios and claimed that he is the reason why the movie is such a super hit, because of his intellectualism, because of his dialogue writing. And as a matter of fact, you see, yeah, this is exactly how life will work. You go ahead, you make tall claims, then your claims fall flat. And instead of saying sorry, you will think that you can escape your way by tall words, by using religion, using religion as a defense. So I think today why India is so angry with Manoj Muntashir is not only because of what happened in Adi Purush, but because of his sheer arrogance that came out after the debacle that happened and after those dialogues that happened, to the extent, and I didn't even mention that in my episode because that happened after the episode came out. He said, Bhagwan Hanuman is not a god. We have made him a god. These sort of statements are not acceptable. I'm sorry. You cannot use my religion, A, for self promotion, and B, when you have managed to hurt sentiments, which is very obvious, you just say a sorry. It's a simple question of a sorry, which I find very surprising that somebody who calls himself so educated can't bring him to say that, okay, maybe I got it wrong. Simple. All right. Now, but don't you think that जिस तरीके के उनको physically उनको harm पहुंचाने की जिस तरीके की press conferences हो रहे हैं, और दूसरा सवाल मेरा ये था कि that ये press conferences हम काफी सालों से देख रहे हैं. So do you feel somehow that maybe ये सब पहले ही शायद इसको रोकना चाहिए था? So, मैंने अपने एपिसोड में भी ये बात कहा था कि any sort of a physical assault or physical harm or physical threat is not acceptable. And we have made it acceptable also. पद्मावत से लेकर जब नाक कान कटने वाले थे to पठान, we've seen these physical threats, we've seen attacks on theaters. अभी तो vandalism in theaters नहीं हुआ है, लेकिन अभी एक और खबर आई थी कि भाई I think अयोध्या में screening was stopped. So that is not acceptable. But I think that अगर आप ये बात समझ जाते that this is not okay, what we have gone ahead and done, you see, it's a very simple thing. And I do not know if the makers understand this or not. I think people are, of course, understanding it.
When you क्रिएटिव लिबर्टी, मैं सबसे ज्यादा मानता हूं क्रिएटिव लिबर्टी को, लेकिन क्रिएटिव लिबर्टी आप तब ले सकते हो जब आप एक सब्जेक्ट को समझते हो, खासकर कि रामायण जैसी एक गाथा, एक एपिक। आप नहीं कह सकते हो कि अच्छा मैं क्रिएटिव लिबर्टी लेता हूं, मैं इसको तोड़ मरोड़ दूंगा, मैं इस डायलॉग को पेडेस्ट्रियन बना दूंगा, स्ट्रीट लेवल बना दूंगा, एंड लोग तो वैसे नहीं आएंगे। लोग तो आएंगे because 600 crores you don't spend without knowing that people will definitely come into the hall. It's a massive investment, the most expensive movie, arguably. You would know if I'm wrong, arguably the most expensive movie ever made. And then you go ahead and reduce it to some sort of action Marvel movie, zero acting, zero GFX. Dialogues is just one part of this whole massive fiasco. डायलॉग्स की वजह से मनोज मुंतशिर इसलिए आ रहे हैं बिकॉज यू डोंट सी द एक्टर्स गोइंग अहेड एंड सेइंग दैट हमने तो अपना बेस्ट काम किया है और जो हमारे काम के ऊपर सवाल करेगा वो रावण भक्त है। इट इज दिस मैन एंड हिज एरोगेंस जो इंडियन टेलीविजन चैनल पर जा जाकर ये चीख चीख कर चिल्ला रहा है दैट अगर आपको इतनी तकलीफ है, इसका मतलब है कि आपको राम से ईर्ष्या है। जय श्री राम का नारा इज अ पायस नारा। जय श्री राम का नारा एक दिल का नारा होता है। उसको जाकर आप, पहले से ही हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स में इस्तेमाल हो रहा है, अब उसको जाकर आप मूवीज में इस्तेमाल कर रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक पायस हिंदू, एक हिंदू जिसमें आस्था है, आई एम नॉट इवन सेइंग बिलीवर एंड ऑल दैट स्टफ, रामायण इज मच 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 बियॉन्ड। मेरे कमेंट सेक्शन पे अगर आप जाके देखोगे, हिंदू, सिख्स, मुस्लिम्स कहते हैं हम रामानंद सागर की रामायण टीवी पर देखते थे, हमें अच्छा लगता था बिकॉज दिस वॉज बियॉन्ड रिलीजन। रामायण इज बिगर देन जस्ट वन रिलीजन। इट इज द स्टोरी ऑफ इंडिया, इट इज द स्टोरी ऑफ गुड वर्सेस बैड। उसको आपने रिड्यूस कर दिया, उसको आपने पेडेस्ट्रियन बना दिया, ये सो दैट इट वन कैन कम्युनिकेट। तो जैसे मैंने अपने एपिसोड में बोला था, फिर एक्सो एक्सो भी लगा देते, इमोजीज भी लगा देते, ब्रो भी लगा देते। So this sort of kiddish explanation, this sort of arrogance that came out on television, I think that is why the anger against Manoj Muntashir in specific, and of course against the makers of Adipurush. Now I just hope very quickly उन लोग को अपने dialogues, उन्होंने बोला है that they will change some of the dialogues. Maybe some of the damage can be undone, but you can't do the other damage that is already done. But some of the damage, so a little less अहंकार। हम रावण की बात करते हैं अहंकार, थोड़ा सा अगर मेकर्स भी अपना अहंकार कम करके थोड़ा डायलॉग चेंज करें, मे बी या। Now, but have you seen such sort of resistance for a movie ever? When have we not seen such a resistance for a big movie? But the only difference मेरे ख्याल से resistance between movies being manufactured and being genuine. हम लोग यहाँ इंडिया में बार बार इसी बात को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि जब ब्रह्मास्त्र के खिलाफ बॉयकॉट होता है, जब पठान के खिलाफ बॉयकॉट होता है, कितना जेन्युइन होता है और कितना मैन्युफैक्चर्ड होता है। और काफी हद तक यू सी some publications, some Twitter handles outraging against it, encouraging people, trying to change the discourse. What I find very fascinating over Adipurush is that मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बैकलैश होगा। मेरे ख्याल से इतना बड़ा बैकलैश कांट बी मैन्युफैक्चर्ड ऑल्सो, और मेरे ख्याल से कोई मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्री एम्प्लॉयड भी नहीं है। ये बैकलैश जेन्युइन है। और पिक्चर देखने के बाद मैंने एक तो लेट मी जस्ट मेक वन पॉइंट वेरी क्लियर। आई वांटेड आदिपुरुष टू वर्क। यू नो व्हाई? बिकॉज आदिपुरुष एक चीज तो कम से कम नहीं करता है जो कि आज की कम्युनल पिक्चर्स क्लियरली करने की कोशिश करती हैं, कि एक रिलीजियस पोलराइजेशन कर दें, अस वर्सेस देम कर दें। That Adipurush does not actively, I know there is this whole Ravan and the fact that the Khilji and Ravan equation that is being drawn, but otherwise given the recent movies that we have seen, कम से कम वो तो नहीं करता था। तो मैंने कहा कि यार अपने धर्म की बात हो रही है, ग्लोरी ऑफ द पास्ट की बात हो रही है, एपिक टेल हैज बीन ब्रॉट इनटू द हॉल्स। बॉलीवुड, I for one want Bollywood कि भैया you learn your lessons, you do a good job. So I thought Adipurush might be an answer to RRR. I thought
Adipurush should work because at least it is spreading a message of a religion without victimizing the other. So when this sort of backlash happened, I was honestly taken aback. And that goes to show, and this is very important, Faridun, that goes to show that एक पिक्चर बनाने के लिए या तो आपने धर्म को रिस्पेक्ट नहीं किया, या तो आपने लोगों को इडियट समझा. And there lies the crux. People, the backlash, is disappointment. It is more than anger. It is the fact that people have felt cheated. That the biggest studios, biggest money, biggest stars, apparently biggest dialogue writer, let's not even get into that. But it shows the bankruptcy. Well, then you have worked in the industry. How can such a lot of money have been spent and people are wondering, किसी को समझ में नहीं आया? Of course, the backlash had already started at the trailer point only. But what can you change after the trailer? So it is more than anger. It is disappointment. It is heartbreak. And so I think while we have seen boycotts, trends, and IT cell campaigns, this sort of mass disappointment, and which you understand the trade better. I'm sure you're following the numbers. But from a massive initial booking, now we are seeing a sudden crash. Why? Alright. आपने जिक्र किया है कि आई थिंक जो गिमिक्स हैं कि हनुमान जी के लिए एक सीट रखी जा रही है सिनेमा हॉल्स में. Maybe I think not, that was not needed. I think कहीं मैंने अपने रिव्यू में भी ये बात बोला था. मुझे एक ही चीज लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीजें इतने तो गधे नहीं हो सकते इन लोग कि इनको मालूम नहीं था कि ये सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है. आई थिंक वाइल मेकिंग द मूवी या ट्रेलर रिलीज होने के बाद इनको बात समझ में आ गई थी कि ये बहुत ही सब स्टैंडर्ड मूवी है. ना इसमें एक्टिंग है, ना इसमें स्टोरी टेलिंग है अच्छी तरीके से, डिटेल्स हैव बीन स्किप्ड आउट, और डायलॉग्स तो है ही घटिया. इन्होंने कहा कि यार पिक्चर तो अच्छी नहीं बनी है, 600 करोड़ तो कम से कम वापस कमाने हैं, लेट अस प्ले द कार्ड, द इमोशनल कार्ड एंड द रिलीजियस कार्ड. और यही चीज इन पर बैकफायर कर रही है, क्योंकि इस बात पर कोई डिबेट तो नहीं कर सकता है, लोगों की आस्था तो है ही है. तो उन लोगों ने कहा कि अब बहुत अच्छी बात है, भगवान हनुमान के लिए एक सीट हम रिजर्व कर रहे हैं, देखिए कितनी आस्था है. और अब वही लोग गाली बक रहे हैं इस पिक्चर को, और वही लोग कह रहे हैं कि भैया भगवान हनुमान को ये पिक्चर मत दिखाना, नहीं तो गदा देकर तुम्हें ही मारेंगे. और मैंने उल्टा अपमान तो होगा ही अपना सिनेमा हॉल में बैठ के. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट यू कैन यूज रिलीजन टू ड्रॉ पीपल टू अ हॉल, और वो चप्पल बाहर खोल के भी आएंगे हॉल के अंदर, क्योंकि आप सबस्टैंडर्ड भी पिक्चर बना लो, भगवान राम की बात है यार, आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, आएंगे. लेकिन आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो. You can't have it both ways, and that is where this whole thing went wrong. You thought I will use Bhagwan Shri Ram's नाम, you thought कि मैं राम सिया राम का नारा लगाकर गाने बजाकर लोगों को हॉल के अंदर ले आऊंगा और फिर उनके आस्था के साथ खिलवाड़ करूंगा. ये एक्सेप्टेबल नहीं है. और ये अच्छा लगा देखकर कि कहीं ना कहीं लोगों ने रेड लाइन एक ड्रॉ किया है कि धर्म के नाम पर आप पिक्चर बना लो, धर्म के नाम पर आप पैसा पीट लो, लेकिन धर्म का अपमान हम अब नहीं करने देंगे आपको. यू कांट टेक अस फॉर ग्रांटेड लाइक दिस, व्हिच इज गुड टू नो. आई जस्ट होप दैट पीपल वेक अप टू दिस फैक्ट कि इंडिया में किस तरीके से दिस हैज बीन गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली. कहीं ना कहीं तो एक फुल स्टॉप लगना होगा. आदि पुरुष से कम ये फुल स्टॉप तो लगा है कि नो, यू कैन नॉट डू दिस टू अस जस्ट बाय एक्सप्लॉइटिंग आवर सेंटिमेंट्स. डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने डायलॉग्स लिखे थे महाभारत के लिए, एंड बी आर चोपड़ा. आज भी जब महाभारत की हम बात करते हैं तो वही सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट आता है, जबकि और भी बने. वो इतने कमाल के डायलॉग्स थे कि दैट आज भी आई थिंक लोगों को याद है. सो आई थिंक एक डायलॉग राइटर मेरे ख्याल से शायद वो भी थे, और कमाल की उन्होंने बहुत ही बैलेंस्ड उन्होंने चीजें लिखी जो कि आज तक लोग याद करते हैं शायद. सो the point that I'm trying to make is a lot of people in the comment section, और मुझे बड़ा खराब लग रहा था जब मैं ये पढ़ रहा था कि उन्होंने बोला कि अगर डायलॉग राइटर का सरनेम कुछ और होता
अगर सोच लो ये रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने बनाई होती या आमिर खान प्रोडक्शंस इसमें इन्वॉल्व होता, तब सिनेमा हॉल थिएटर्स की क्या हालत होती, तब देश में क्या सिचुएशन होता, क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाता। सो फ्रॉम अ कल्चरल सिंथेसिस टू, चलिए आपने ये सब भी नहीं किया, आपने बहुत ध्यान रखा कौन बना रहा है, ओम राउत बना रहा है, इज द डायरेक्टर, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इतना सब कुछ ध्यान रखने के बाद भी जब आप ये सिचुएशन पे आते हो, और इसके पीछे एक और रीजन भी है, यू नो, I am also, you are saying now that why am I being so hard on Manoj Muntashir? I have no sympathies for that man is because he really took sentiments for granted. लेकिन मनोज मुंतशिर ने भी सोचा होगा कि यार देखो इन लोग तो कर ही रहे हैं, एंग्री हनुमान का पोस्टर तो हर गाड़ी पे लगा हुआ है। तो लॉट ऑफ कमेंट्स वर लाइक, अच्छा तुमने अपने रिव्यू में कहा था कि हनुमान जी वैदिक स्कॉलर थे। मैंने कहा भाई ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो कोई मैंने कोई एक्सपर्ट लेवल आपको नॉलेज भी नहीं चाहिए रामायण में टू नो दैट बिसाइड्स हिम बीइंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड हिज इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ, ही वाज अ वैदिक स्कॉलर। लेकिन आपने तो उनकी इमेज एंग्री हनुमान के बना के रख दी रास्ते पे, तो उसी रास्ते पर गाड़ी पर चलते हुए एंग्री हनुमान के स्टिकर पे इन्होंने वैसे डायलॉग चिपका दिए, तेल भी तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की, जिससे फिर लोग को बहुत गुस्सा आया। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब आप हनुमान को एंग्री हनुमान बना रहे थे, यू वर रिड्यूसिंग हिम टू अ कार स्टिकर, तब लोगों की आस्थाओं को इफेक्ट नहीं हुआ था। हमने एक हैप्पी हनुमान का फिर टी शर्ट बनवाया था टू काउंटर दैट एंग्री हनुमान। पीपल people didn't want to buy it, people didn't see a reason in it उस समय। अब उनको लग रहा है कि यार ये तो मजाक बनाया जा रहा है हमारे भगवान का। So from accepting multiple point of views to mocking your own god, but maybe now that we wake up and say that हाँ यार, इज्जत धर्म के नाम से नहीं आती है, इज्जत तो रामायण की बहुत सारे लोग करते हैं अक्रॉस रिलीजन, एंड दैट इज द रियल पावर ऑफ रामायण, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। एंड मैं बता रहा हूं 10,000 कमेंट्स है, आप जाके कहीं भी स्क्रॉल करके देख लो, आपको एक थ्रेड मिलेगा कि रामायण हमें भी पसंद है, एंड पीपल आर सेइंग चर्च से हम वापस जल्दी आ जाते थे रामायण देखने। इससे ज्यादा पावर स्टेटमेंट क्या हो सकता है भाई? सो आई जस्ट होप दैट रामायण कम्स बैक एंड दिस वन इज फॉरगॉटन जितनी जल्दी हो सके। लेकिन हाँ, रिमेंबर नाउ योर मनोज मुंतशिर इज सेइंग दैट ये रामायण नहीं है। हिज डिफेंस इज, अब तो ये तो आदि पुरुष है, हम तो इंस्पायर हुए थे, पहले 1% हमने चेंज नहीं किया, आपको पूरी आस्था मिलेगी, मैंने चप्पल खोल के लिखा है, और अब बोल रहा है कि ये तो इंस्पायर्ड है, आप मुझे ब्लेम ही नहीं कर सकते हैं। दैट इज द सॉर्ट ऑफ डबल टॉक दैट पीपल आर सीइंग इज as completely unacceptable. सो आकाश, हमारी हमारी कुछ महीनों पहले भी बात हुई थी, और पठान के सिलसिले में, और हमने देखा कि किस तरीके से अगर एक फिल्म ऐसी भी आई कि सिनेमा हॉल्स जो हैं वो एकदम बिल्कुल आई थिंक ऐसे खुशी का जोन बन गए, और लोग डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अक्रॉस अक्रॉस, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बट दुनिया भर में, बहुत से जगहों पे। और अब शाहरुख खान की जो अगली फिल्म आ रही है जवान, तो अभी लेटेस्ट उसमें ये है कि वो बुक माई शो पे 7 सितंबर को पिक्चर रिलीज हो रही है, लेकिन एज ऑफ नाउ बुक माई शो में 90,000 से ज्यादा लाइक्स हैं, विच शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि फिल्म में है। कैसे कैसे देखते हैं आप इस फिनोमिनन को? आज के टाइम पे सिनेमा हॉल्स में लोगों को लाना आसान नहीं, बट ये इस तरीके का एक एक्साइटमेंट जनरेट कर पाना। मैं तो चाहता था कि इस मूवी में पर भी लोग एक्साइटेड होते। मैंने एक छोटा सा लाइव स्ट्रीम भी किया था, व्हेन विल बॉलीवुड लर्न, एंड वो मैं शाहरुख खान के पॉइंट पे आ रहा हूँ क्योंकि लगता है बॉलीवुड पे शाहरुख खान पर ही टिका हुआ है इस समय। 3 साल पहले वी लॉस्ट सुशांत, और मैंने एक लाइव स्ट्रीम इसलिए किया था बिकॉज आपको बड़ा ऑड लगेगा, क्योंकि हम लोग देशभक्त पे पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, हम लोग सिस्टम को सवाल उठाते हैं। आज तक हमें सबसे ज्यादा गाली किसी पॉलिटिकल एपिसोड या किसी पॉलिटिकल पर्सन पर टिप्पणी करने पर नहीं मिली है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। और हमारे सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूं मैं, रैंडम ट्रोल्स और आईटी आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं।
सबसे ज्यादा गाली हमें मिली थी ये सवाल उठाने पर कि आप लोग सुशांत की मौत को सर्कस क्यों बना रहे हो। और ये सवाल हमने अनफॉर्चुनेटली, हमें कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने 1-2 महीने के अंदर ही उठाया था, जब बात काफी साफ हो गई थी हमें तो। लेकिन सुशांत की बात 3 महीने तक चली थी, और अच्छे से अच्छा बंदा यही बोल रहा था कि ये कंस्पिरेसी है, वो कंस्पिरेसी है। दो चीजों का डिस्कशन होना था उस समय सुशांत की मौत के बाद। ए, कि बॉलीवुड में जो क्लीक है, बॉलीवुड में जो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर है, बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म है, बॉलीवुड में जो लैक ऑफ टैलेंट है, उस पर डिस्कशन करो। और दूसरा ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ, सुइसाइड पर डिस्कशन होने की जरूरत थी। चलिए, मेंटल हेल्थ तो इंडिया में डिस्कस होने से अभी रहा, क्योंकि यहां तो अगर कोई आदमी खुश है, गुड लुकिंग है, सक्सेसफुल है, वो तो सुसाइड कर ही नहीं सकता है। तो वो तो इट्स अ लॉन्ग डिबेट। दूसरा डिबेट जो होना था कि हम कहां गलत हुए हैं, डिड वी फेल सुशांत, वो डिबेट हुआ नहीं। बॉलीवुड आज भी वही गलतियां कर रहा है, और ये हमें इस पिक्चर से दिखा कि आपने टैलेंट पर एम्फोसिस नहीं दिया, आपने धर्म पर एम्फोसिस दिया, और आपने सोचा पिक्चर चल जाएगी, जो कि चली भी इनिशियली इंटरेस्ट के चलते हुए। पठान had that sort of interest because शाहरुख खान was coming on the screen after 4 years. मैंने पठान फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी है, और द काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय, मैं पिक्चर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने अपने रिव्यू में भी बोला है कि पठान इज बेसिकली जेम्स बॉन्ड की जो स्टोरी होती है, 50 जेम्स बॉन्ड ऐसे बन चुके हैं रोग एजेंट्स के बारे में, एक और पिक्चर है। बट पठान डज नॉट क्लेम टू बी समथिंग एल्स। पठान is an unabashed celebration of cinema, big screen action, song and dance. जो प्रॉमिस किया गया था वो डिलीवर हुआ। So people were happy and people told other people, और इसलिए 1000 करोड़ किया। And of course शाहरुख खान्स entire persona, which is very delightful. So again, अगर जवान को लेकर ये बात है, अगर ये इंटरेस्ट है, which is great. But my only point is that the only person who's holding the fort in Bollywood is an outsider, and the ultimate outsider. तो बॉलीवुड को यह बात कब समझ में आएगी कि आपने अपने अल्टीमेट इनसाइडर्स लगा के ब्रह्मास्त्र 400 करोड़ रुपए में कमाई, विच आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग अर्नड 415 करोड़। आपने अपने बेस्ट वीएफएक्स, बिगेस्ट स्टार्स, मल्टी स्टारर बनाकर आपने ब्रह्मास्त्र बनाई, उसकी हालत क्या हुई? barely managed to recover cost. लग रहा है कि आदि पुरुष के साथ भी होगा, ग्लोबल अर्निंग्स के चलते 600 करोड़ तो कमाई लेगी, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग, बट इट विल नॉट हैव द रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल। माय क्वेश्चन इज कि वो ग्राउंड ब्रेकिंग सिनेमा कब करोगे, वो चेंज कब करोगे, और वो अरे भाई आरआरआर लेवल ग्राफिक्स कब कर लोगे? मेरा सिंपल सा सवाल है। आपके पास एक बेंचमार्क है जो हॉलीवुड नहीं, आप ही के देश में बना है, 500 करोड़ रुपए में बना है, आपने तो 600 करोड़ रुपए लगा दिए। My question is, when are we going to see that answer from Bollywood? शाहरुख खान के करिश्मा में और शाहरुख खान के फेम पर कब तक चल लोगे? और अब तो समझ जाओ कि भैया आउटसाइडर टैलेंट इज रिक्वायर्ड, और आपकी टैलेंट खत्म हो चुकी है। शाहरुख खान इज नॉट गोइंग टू सेव बॉलीवुड। ये चीज मैंने पहले भी कहा था, ओ पठान इज अ सुपर हिट, बॉलीवुड इज बैक इन बिजनेस। नो, आई एम सॉरी, इट इज नॉट बैक इन बिजनेस। It is not back in business. You can't peg one hit and one superstar, and maybe the last superstar. I don't know what is going to happen to Bollywood after him. Who's there? Who's going to pull people into the halls? ये तुम्हारा आर्चीज वाला एंगल नहीं चल पाएगा बॉस। यू आर लॉन्चिंग, यू आर रीलॉन्चिंग, एंड यू आर कंटिन्यूअसली गिविंग चांसेस टू पीपल इनसाइड। थोड़ा बहुत नेपोटिज्म इज अंडरस्टूड, बट नो, not at the scale that we are seeing here. Okay, and you know how do you're saying that maybe he's the last superstar. अब ये भी खबरें सामने आई हैं कि that maybe he has decided that he will not be doing any interviews or media interactions. बहुत से लोगों को जिनको मैं जानता हूँ वो शाहरुख खान को maybe more than his acting and his stardom, they like him and respect him because of the way he talks, or what he talks in terms of he's a very fine speaker. Yeah. ये कैसे देखते हैं आप इस पहलू को कि that he has maybe decided not to talk to the media anymore? Given the penchant for our IT cell and trolls,
to take out any sort of a controversy out of anything. Do I blame the man? शाहरुख खान की पुरानी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की या पुरानी इंटरव्यूज में अगर आप झांक कर देखिए तो द काइंड ऑफ स्टफ दैट ही हैज सेड, ही द मैन रीड्स अ लॉट, और अगर वो अपनी बात रखने लगे तो बहुत बखेड़ा खड़ा हो सकता है, ये बात तो है. सो मे बी झूठ ना बोलो, बैलेंस ना करो, दांत दबाकर बात ना करो, इससे अच्छा है कि भाई चुप रहो. I agree with it? No, but I understand why he's doing it. We all know what happened when Amir Khan spoke up. और सपोर्ट मिले ना मिले लोगों का हमें पता नहीं. जब लोगों का सपोर्ट अगर मिले तब ठीक है. डोंट फॉरगेट दैट टुडे आदि पुरुष को लेकर लोग गुस्सा हैं, लेकिन ये सोचो कि ये गुस्सा तो कुछ भी नहीं है कंपेयर्ड टू, अगर मैं हिमाकत की बात करूं, कि ब्रह्मास्त्र में एक शॉट था जहां रणबीर मंदिर की घंटी बजा रहा था और वो जूते पहना हुआ था. वी डोंट नो कि वो मंदिर के चौखट के बाहर वो घंटी थी या चौखट के अंदर थी, बट एक शॉट था. उस शॉट को लेकर कितना बखेड़ा हुआ. एक बिकिनी जो कि कुछ सेकंड्स के लिए एक गाने में था, उसको लेकर कितना बखेड़ा हुआ. अगर मैं इसको एज अ बेंचमार्क मानूं, एज अ बॉल पार्क मानूं, भाई साहब ये पिक्चर के मेकर्स और ये पिक्चर के डायलॉग राइटर को तो जेल में होना चाहिए था अभी तक फॉर हर्टिंग सेंटिमेंट्स. तो आई एम श्योर दैट इस मैं ये आई एम श्योर नहीं, ये तो आप मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो कि जवान के पहले बॉयकॉट आएगा कॉल, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी निकाली जाएगी. हो ही नहीं सकता है अनलेस अनटिल शाहरुख खान ने कुछ लोगों को बैठा के बोला होगा अब देखो इसमें कहां खूंट निकाला जा सकता है, कहां अपमान देखा जा सकता है, क्योंकि निकाला तो जाएगा. द ओनली डिफरेंस इन आदि पुरुष इज की आप हर जगह देख रहे हो और आपको दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. अब मैंने वो तो ऑटोमेटिक अपमान चल रहा है यहां तो. लेकिन I can understand why he's going to be careful, and this is going to be the ultimate test for Shahrukh. देखिए पठान आई 4 साल उनके ड्राउट के बाद, people were vying for an action flick, timing was perfect, but within a few months another movie of Khan doing that level of business, boss अगर ये है, then I think this is the ultimate test for a superstar. Okay, so Akash, आप बहुत ही सीरियस आपके वीडियोस होते हैं, लेकिन आप एक फन एलिमेंट भी है. सो हमने डिसाइड किया कि आज एक रैपिड फायर आपके साथ ही क्यों ना हो जाए. फंसाओगे तुम भी. You like it, you like it, you like it. अच्छा. All right, rapid fire with Akash Banerjee. Your all-time favorite film? Oh boy, there are so many. This is not a rapid fire question. Rang De Basanti, Bollywood. Rang De Basanti. All-time favorite actor? Shah Rukh Khan. All-time favorite actress? Deepika would come close. If Pathaan 2 is made, then who can be the villain? You have to. Actually, we have to have a new villain. I was pretty happy with the villain we had. Because John dies. हाँ वही नहीं. Listen, John does not die. We didn't see John die. Oh come on, you haven't seen Fast and the Furious. That means अरे हॉलीवुड के पिक्चर में आजकल रीबर्थ हो रहा है. हर बंदा जो फास्ट एंड द फ्यूरियस में मरा है वो वापस आ जाता है. अब गैल गडोट भी वापस आ गई है at the last scene of Fast and the Furious X. तो वापस तो कोई भी आ सकता है. Maybe he had a But parachute. you know, knowing, I think the film industry, they would definitely have a new villain. That's how Doom works. Well, I would say, see, you asked me best actor. तो I mean, of course, मैं बॉलीवुड एक्टर की बात कर रहा था, बट अगर मेथड एक्टिंग की बात करें, then मनोज बाजपेयी, and I would love to see him as a villain there, I guess. करारा जवाब मिलेगा. So, that's a very interesting choice. Okay, who can be the next crossover actor or actress from India? But I would like to see people like Manoj Bajpayee being the next crossover actor, actresses. But in superstardom, in like conventional, I do not know. There is I'm not going to say Kartik Aaryan and all that stuff. There is a dearth of actors. I'm sorry. All right. Would you want to watch the first day, first show of Tiger versus Pathaan, and why? Would I want to watch it? Yeah. See,
movies in India continue to be that thing, that escape from reality. And movies like Pathan or even a Tiger versus Pathan would yeah, of course. So, and that's why I think Salman works also. I think Salman knows that he works is because he gives escapism. I'll definitely watch it. I'll watch it first day, first show, because and viewers should know this, and I know somebody sitting in any other country might not be able to experience this. There was louder hooting when Salman came on screen in Pathan Right. than when Shah Rukh came on screen. So it's just the vibe of the first day, first show. And very few actors are able to pull this kind of vibe now these days. Absolutely. Okay, if you have to choose between Amir, Salman, or Shah Rukh as the number one Khan, then who would it be and why? Amir, for the kind of movies that he does, definitely. I mean, secret superstar. Who would have the balls to do something like that? But Shah Rukh for the screen presence. Okay, all right. Ye ya wo. If you have to choose one, I'll give you two options, and you have to choose one option. Amir ya Shah Rukh, the better actor. Amir. Shah Rukh ya But Salman, you see, who has Dil Shah Rukh ke paas hai. Amir is the better actor, but the heart is saying Shah Rukh, Shah Rukh, Shah Rukh, Shah Rukh, Shah Rukh. See, that is the problem with Shah Rukh. Shah Rukh ya Salman, who has a bigger box office draw? I'm sorry. I have to say, Shah Rukh, maybe the numbers are with Salman, but Shah Rukh. Okay, overseas collections ya domestic collections, what is more important? Oh, for me, overseas collections should be as important, if not more important, is because we have to get out of this mindset that Bollywood makes movies only for the Indian masses. Bollywood should be making for the whole world. It's high time. Right. No, Pathan has done over 4 million pounds in UK, and even if you do 1 million pound in UK, that's a blockbuster. And say Gulf, US, Canada, the numbers, Australia, New Zealand, the numbers are extraordinary. I mean, look at Okay. the Hollywood movies coming and doing such a lot of business here. It's high time that we keep talking about our soft power strength. Our biggest soft power is Bollywood. It's high time. And there again is the question of talent. If you have talent, Bollywood will crack the international markets. Why not? Right. South Indian films, yeah, Bollywood, better quality of films. Chalo, first question where I don't have to think before answering. Of course, South Indian. By miles. By miles. Brahmastra, yeah, Ravan, better VFX according to you. Ravan as in Shah Rukh Khan's stuff. Yeah. Ravan. Lot of people are now saying, so not only we are talking about the Ramayana on television, lot of people saying, yaar, meri to Ravan ke liye respect बढ़ गई hai after seeing the VFX. That is the tragedy. People are remembering Ravan's VFX. And that was 10 years after back. Adipurush. Yeah. Okay, Deshbhakt ya Akash Banerjee, who's more cooler? Bhakt Banerjee. Okay. Politics ya films, which gets more response to your videos? No, it continues to be politics. But the kind of reviews that we do are not only entertainment reviews. A lot of people have asked us this question, but why are you doing movie reviews? We are not doing movie reviews. We're very clear about it. We are only reviewing those movies that have an impact on politics or on society, that have a clear political hint to it or have a very clear social impact to it. And therefore, it is a conjunction on, can I say a Kerala story is an entertainment story, is a Bollywood story? No, it has everything to do with politics and the things that are surrounding us. So in that sense, they are sort of semi-political socio reviews. But at the end of the day, there is so much more that we do in terms of politics and news. They continue to get more views. All right. WhatsApp ya Telegram? Telegram is better, but what you see, this is the first mover advantage. Unfortunately, you can't do without WhatsApp. So it's WhatsApp. Bengali food ya Lucknowi cuisine? Bengali food. You should not ask these questions. Start feeling hungry. Twitter ya Instagram? Better engagement? Oh, actively, aggressively, Instagram, leave Twitter, screw Twitter. I have spent 10 years on Twitter.
aggressively, actively telling people to stay away from the most toxic platform ever built. Go for Instagram that has better people on it, that has better audience management, that has better engagement tools, that has better hate prevention mechanisms. By miles, Instagram is a better platform from many directions. Go for Instagram. Insta Reels या YouTube Shorts? Insta Reels. YouTube Shorts is a very convoluted version of the platform. Also, questions arise with its interference on your long format video. And somehow the algorithm of the Insta Reels works much better than YouTube Shorts. YouTuber या social activist? What would you like to be called as? I think the term social activist itself has been misused and maligned a lot. YouTuber, active citizen, informer, a little bit of rabble rouser, questioner are better terms. Okay, Netflix या Amazon, better content? Depends completely on your viewing habits. If you like more global content, it is Netflix. I don't think Amazon would ever do something like a Black Mirror. So it's a personal choice. Netflix. Films या OTT shows? In sheer talent, diversity, storytelling, OTT by miles. And there lies my rub. And again, I'm coming back to the same old grind that I'm saying is, while the Bollywood nepotism party has existed for decades, the fact is that now we have social media, now we have OTT platforms, which shows the diversity of the talent, which shows the depth of talent that this country has. And when you see Bollywood after seeing OTT, after seeing the talent on social media, and then you see, what the hell? And that is why Bollywood should be a little aware, is now people have a choice, people have options, people have comparable metrics to see talent, to see skill. And that is why Bollywood is where Bollywood. True or false? Following statements, you have to just let me know whether you feel it's true or it is false. Jaane Bhi Do Yaron sequel will be a big hit if made today. It will be banned before it is launched. False. Cinema is no more the cheapest form of entertainment. It's a luxury. True. Popcorn costs more than the movie ticket. Shows like Scoop and Dahad give Indian content a good name on the world stage. Internationally, India's content name is being upheld by OTT content, and it shows our depth and ability to crack the international market. True. Okay, you're dying to watch Zoya Akhtar's Archies. I am dying to watch the next level of and next generation of nepotism coming alive. True. Post Heart of Stone, Alia Bhatt is the next crossover star from India. Perhaps, full respect to Alia, perhaps the most difficult job for Alia to come across as an international villain, from what I understand in that from the trailer. If she pulls it off, agreed, next crossover star. If she pulls it off. Box office numbers are often inflated by Bollywood producers. Increasingly, a very difficult a metric to measure, including cost of production, is also manipulated so that the movie can be shown as a hit or a flop. True, it's manipulated. Last one, propaganda films are here to stay. Propaganda, true, unfortunately, and they will stay till people wake up, till people understand the game that is being played. Either politics or religion is being fed through these propaganda movies. Unless people wake up, it'll take some time for people to wake up. All right. So Akash Banerjee, as always, truly fascinating talking to you. Thank you very much for your time. Always a pleasure. Thank you so much.